Children, welcome to the maths class. We are doing the lesson geometry. हम lesson कर रहे हैं geometry. And as I have already told you that geometry is a branch of mathematics in which we study about different shapes, their measurements, points, lines and other related things. ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट्स, लाइंस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो वी हैव डन टिल नाउ 2-dimensional plane shapes, 3-dimensional shapes, solids with plane surfaces, solids with curved surfaces. अभी तक हमने क्या क्या किया इस लेसन में? अभी हमने किया प्लेन शेप्स, जिसको कि हम 2-dimensional शेप भी कहते हैं, देन 3-dimensional शेप्स. फिर हमने सरफेस किया. सरफेस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेसेस, प्लेन सरफेस और फ्लैट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस. उसके बाद फिर हमने पढ़ा सॉलिड्स विथ प्लेन सरफेसेस, मतलब ऐसे शेप्स, ऐसी चीज़ें जिनमें हर तरफ सिर्फ प्लेन सरफेस होता है. देन वी डिड सॉलिड्स विथ कर्व सरफेस. सॉलिड्स विथ कर्व सरफेस में हमने पढ़ा ऐसे चीज़ें जिनका सरफेस जो है राउंड सरफेस होता है. कर्व सरफेस को राउंड सरफेस भी कहते हैं. ओके, सॉलिड्स विथ प्लेन शेप्स में व्हाट आर द एग्जांपल्स? ब्रिक, बुक, any box, then chalk box, dice, pencil box, any gift packet, anything. Then solids with round surface, that is curved surface, we have done. क्या क्या हमने examples देखे? Anything which is round, ball, lemon, pomegranate, guava, any fruit, any vegetable which is round like potato, these are all solids with round surface or curved surface. Now today we will do solids with plane and curved surfaces. That means ऐसे solid objects जिनमें plane surface भी होता है and curved surface भी होता है. Okay? Solids, that means any object which has 3 dimension. 2 dimension में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, एंड एनीथिंग विच हैज़ द 3rd dimension ऑल्सो, दैट इज हाइट और डेप्थ. हाइट भी बोल सकते हैं, डेप्थ भी बोल सकते हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जब ये 3 dimensions होते हैं, देन इट इज अ सॉलिड शेप. तब वो क्या होता है? सॉलिड शेप होता है. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट solids with plane and curved surfaces. मतलब ऐसे solid, ऐसी चीज़ों के बारे में जिनमें plane surface भी है और जिनमें curved surface. Okay, plane surface is flat surface and curved surface is round surface. Now we have observed that cubes and cuboids have flat surfaces, whereas the surface of a sphere is curved. अभी तक in 3-dimensional shapes we have done 5 basic shapes. You can see in 3-dimensional solid shapes we have done 5 shapes: cubes, cuboids, sphere, cone and cylinder. In my previous video I explained about cube, cuboid and sphere. Cube and cuboid have flat surfaces. That means they have plane surfaces on all the 6 sides. Cube and cuboid have 6 sides and the surface on all 6 sides is flat. That is plane surface. Okay? Whereas the surface of a sphere is curved, like ball, tomato, apple, orange, lemon. These are all spheres and these are all spherical in shape and their surface is curved.
or round. Now today we will learn about the other two solid shapes, that is cone and cylinder. Now see, in the example, the following objects are cylindrical in shape. We have already learned that cylinder has one plane surface and two curved surfaces. Okay, when we were doing solid shapes, you must be remembering we were doing when solid shapes, these are cylinders. Okay, these objects are in shape of cylinder. So now cylinder, the following objects are cylindrical in shape. Here you can see, आप देख सकते हो सिलेंडर है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सिलेंड्रिकल है शेप में, लाइक ट्यूबलाइट, एनी बॉक्स, किचन में जो मम्मी बॉक्स रखती हैं जिसमें सब सामान रखती हैं, मसाले हैं, राशन है, चीज़ें हैं, दोज बॉक्सेस. देन टिफिन कैरियर, मग, गैस सिलेंडर. These objects are cylindrical in shape. Here you can see that it has three faces. A cylinder has three faces. One is this face, which is round. The top face, which is a flat surface, and bottom face, which is again a flat surface. Okay, the middle shape is round surface. Then you will see there are two edges. One, that is the edge connecting top face and the body, and bottom edge you can say, which connects the bottom face and the round surface. So therefore a cylinder has three faces, one is round and two flat and two edges. It does not have any point. You cannot see any point in cylinder. Okay, so cylinder में two edges हैं. Okay, first edge है जो कि top face, and that means जो top face है and बीच का जो round surface है उसको connect करती है, उसको join करती है, and second edge is the edge जो कि bottom face और round surface को connect करती है. So a cylinder has two edges and three faces. Three faces मतलब कौन से three faces हैं? One is a round face and top face and bottom face, which are flat faces. मतलब बीच का round face और top face और bottom face जो कि flat हैं. Okay, they are plane surface. So cylinder has two edges and three faces, but no corner. Cylinder में two edges हैं और three faces हैं, लेकिन कोई corner नहीं है. Its two faces, that is bottom and top, are plane, and the third face is curved. जो two faces हैं, ऊपर का top face और bottom face, they are plane. They have flat surface, and the third face, that is curved. Now if you keep a box, जैसे ये round, जैसे ये डालडा का box है, इस box को अगर आप top face को अगर flat surface पे रखोगे, then also it will stand, तभी भी खड़ा रहेगा ये. और अगर आप इसका जो bottom face है उसको किसी flat surface पे रखोगे तभी भी ये खड़ा रहेगा. But if you keep the round surface on any flat surface, it will not remain at its place. It will keep on rolling. जैसे अगर ये डालडा का ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर आप इसके बॉटम फेस को किसी फ्लैट पे रखोगे तो वो बॉक्स जो है वो अपनी जगह पे रहेगा. इसका अगर टॉप फेस है उसके साइड से अगर आप किसी इसको फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो भी ये अपनी जगह पे रहेगा. बट इफ़ यू कीप द राउंड फेस, जो बीच का जो राउंड फेस है उसको अगर आप किसी फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो इट विल नॉट रिमेन एट इट्स प्लेस. वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा, वो रोल करता रहेगा आगे पीछे, बिकॉज द सरफेस इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ राउंड. अगर राउंड फेस को टेबल पे या किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखोगे
किचन में प्लेटफॉर्म है, ज़मीन पे रखोगे, किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो वो अपनी जगह नहीं रहेगा, वो रोल करता रहेगा। वेयरएज अगर आप टॉप फेस या बॉटम फेस को रखोगे तो वो बॉक्स अपनी जगह पे स्टिल रहेगा। दिस इज बिकॉज द मिडल फेसेस, बीच का जो फेस है उसकी जो बॉडी है इस बॉक्स की वो राउंड है, सो वो रोल करती रहेगी। सिमिलरली यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अ टिफिन कैरियर। टिफिन कैरियर में भी एक बॉटम फेस है फ्लैट, ऑफ कोर्स द टॉप फेस इज नॉट कम्प्लीटली प्लेन बिकॉज ऊपर हैंडल होता है, लेकिन हैंडल के ऊपर जो बॉक्सेस हम एक के ऊपर एक लगाते हैं तो टॉप वाले बॉक्स का तो सरफेस प्लेन होता है। ऐसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में भी ऊपर हैंडल होता है, ऊपर होल्ड करने के लिए हैंडल जैसा रहता है, बट अदरवाइज गैस सिलेंडर इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप। ट्यूबलाइट्स है, उसके दोनों टॉप फेस एंड बॉटम फेस में कनेक्ट करने के लिए पॉइंट्स रहते हैं। सिमिलरली द chalk which the teachers use, which we use in the class, is a very good example of cylinder. It has one round surface and top face and bottom face. Top face and bottom face are plane surfaces and the बीच में जो face है that is round surface, that has round surface, उसका surface round है। जैसे pen, then your pencil, before you sharpen it, it is a cylinder, it is cylindrical in shape. Top face and bottom face are plane surfaces and जो बीच का face है that is round surface. Okay, so these are some of the examples of cylinder. A cylinder has two top face and bottom face, जो है वो plane face है, plane surface है, and बीच का जो face है that has round surface, उसका surface क्या है, round है। Now next is cone. Here we are discussing about the solid shapes which have flat surface and round surface both. यहाँ पे हम ऐसे सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि राउंड शेप भी है और राउंड फेस भी है और फ्लैट फेस भी है, फ्लैट सरफेस भी है। ओके, सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट इज अ कोन. See a cone, it has one face which is round and one bottom face which is flat. So it has only one edge, the edge which is connecting round face and the bottom face, and it has one corner. This is one face and this is one face. This is edge and this point is corner. So a cone has one edge, two faces and one corner. Its one face is plain and the other is curved. Cone में आप देखोगे one edge है. This is the edge which is connecting the flat surface and the round surface. It has two faces. One face has flat surface. एक जो face है उसका surface flat है, and another face which has round surface. और जो दूसरा face है उसका surface है round and it has one corner. Okay. Now examples you can see is ice cream cone, radish, carrot, green chili, your pencil, then your birthday cap. Now your pencil is an example of cylinder before it is sharpened. जब आप पेंसिल, जब तक आप उसको शार्पन नहीं करते हो, टिल द टाइम इट इज़ न्यू, जब तक वो न्यू है, जब तक उसको आप छीलते नहीं हो, टिल देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसका बीच का जो फेस है दैट हैज़ राउंड सरफेस और टॉप फेस और बॉटम फेस जो है दे हैव फ्लैट सरफेस. टॉप और बॉटम फेस का सरफेस जो है वो फ्लैट है और बीच की बॉडी, जो बीच का जो फेस है उसका सरफेस राउंड है. बट वंस यू शार्पन इट, जब उसकी आप नोक निकाल लेते हो, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोन. ओके, देन इट हैज़ वन कॉर्नर, इट हैज़ वन एज दैट इज द बॉटम एज. दिस इज लाइक योर पेंसिल ना, ऐसे करके पेंसिल होती है. सो ये दिस इज वन एज, ओके, one face and this is second face and one
corner. Okay, so its one face is plain and the other is curved. जो bottom face है वो plain है and जो दूसरा face है that has round surface. दूसरा जो उसका face है वो curved है. Okay, so square and rectangle are the solid shapes which have only flat surface or plane surface. Square और rectangle ऐसे दो solid shapes हैं जिनमें सिर्फ plane surface या flat surface है. Then sphere is a solid shape which has only curved surface or round surface. Sphere जो है वो एक ऐसे solid object है जिसमें सिर्फ round surface है या curved surface है. Cylinder and cone, these are the two solid shapes which have flat surface as well as round surface. मतलब cylinder और cone ऐसे दो solid objects हैं, ऐसे दो solid shapes हैं जिनमें flat surface भी है and round surface भी है. Okay, so now to sum up, a cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 corners. In my previous video, I have already explained about the sides, about the edges, about corner, about faces, everything. So a cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 corners. एक cuboid में कितने face हैं? 6 faces and all the faces represent a rectangle. 12 edges and 8 corners. And a cube also has 6 faces, 12 edges and 8 corners. That means the number of faces, edges and corner is same in cube and cuboid. मतलब cube और cuboid में number of faces, edges और corner तीनों equal होते हैं. The only difference is in a cuboid all the 6 sides represent a rectangle. तो cuboid में जो सारे 6 sides हैं वो rectangle represent करती हैं और cube में जो 6 sides है वो square represent करती है. But otherwise everything is same. 6 faces, both have 6 faces, 12 edges and 8 corners. Now cylinder has 3 faces, 1 curved face and 2 flat faces. Top face and bottom faces they are flat or plain and one is round face. It has 2 edges and no corner. A cone has 2 faces, 1 flat face and 1 round face, 1 edge and 1 corner. And sphere has only 1 face, that is only round or curved face. A sphere has only 1 face, that is around, या तो इसको round या curved surface बोलते हैं. सिर्फ एक उसका face है, कोई edge नहीं है and no corner. Okay, so these are the basic solid shapes. Now here you have to write the name of the geometrical shape of each of the following objects. मतलब ये जो objects दी हुई हैं इनका आपको सबका geometrical shape का नाम लिखना है. Write the name of the geometrical shape, that is cube, cuboid, cylinder, cone or sphere. So you have to write the name of the geometrical shape of each of the following objects. Now, what is the first object? First object is the faces which you can see are rectangle in shape and it has all plain faces. So, this is a cuboid. Okay, this is a cuboid. You have to write the name of the geometrical shape. Now next you can see 1 round face and 2 top face and bottom face as flat faces. क्या आप देख रहे हो? दो, there are 2 flat faces, top and bottom, and बीच का जो face है that is round face. So this is a cylinder. C-Y-L-I-N-D-E-R, cylinder. Then dice is the perfect example of a cube. Then next
Next is an orange. No, maybe it is a pomegranate जिसको अनार कहते हैं. So, but whatever it is spherical in shape. So, it is a sphere. S-P-H-E-R-E, sphere. Then, this is a cone because it has one round surface and one flat surface. And this is point. Can you name the object? This is a funnel which is used in pouring some liquid like petrol, diesel. Okay. So this funnel is used in pouring liquid. This is a cone. One round surface, one flat surface and one point. Now this fruit again is spherical in shape. So this is S-P-H-E-R-E, sphere. Okay. Then again, what are the objects? What is the name? Ice cube. Ice cube, maybe cube also, maybe cuboid also. It depends on the shape of the ice tray. Okay, it depends on the shape of the ice tray. Here it is a cuboid. The B-O-I-D. The ice cube which we are seeing in this picture is a cuboid. But ice cubes can be cube also. Ice cube का shape cube भी हो सकता है. It depends कि जिस ट्रे में हम आइस को जमाते हैं, आइस वाटर फ्रीज करते हैं, आइस फ्रीज करते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉक्सेस, जो उसमें जो बॉक्सेस होते हैं उसका शेप क्या है. देन दिस इज अ मग. दिस इज अ सिलेंडर बिकॉज इट हैज वन curved surface and one and two flat surface. This is radish. This is again cone because it has, how do you know it is a cone? Because it has one curved surface. Any object which has all faces as flat surface, plane surface and rectangle in shape is a cuboid. Any object with six faces, with six flat faces you can say, and all the faces represent a square, that is a cube. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अगर all six faces जो हैं वो अगर प्लेन है and each face represents a rectangle, तो वो क्या है, वो क्यूबॉइड है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके सारे faces, all six faces are flat and they represent, each face represent a square, then it is a cube. If something is round, it is very easy to identify. It is a sphere. If something is absolutely round, then if some object has one round surface and two plane surface and no point, then it is a cylinder. And if an object has one round surface, one flat surface and one cone, then it is a cone. One point, sorry, if one round surface, अगर एक round surface है, एक flat surface है and एक point, okay, and one edge, then it is a cone. Okay, so this is how you can identify by seeing the objects whether they are, what is their shape, मतलब उनका geometrical shape क्या है. ओके, किसी भी चीज़ को आप, किसी भी सॉलिड शेप को आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, उसके ज्योमेट्रिकल शेप का नाम क्या है. नाउ आई विल शो यू दीज बेसिक सॉलिड शेप्स. हियर यू कैन सी द शेप्स. These are some of the three-dimensional shapes, that is 3D shapes. These shapes are solid और hollow. Hollow मतलब अंदर से खाली. तो जो ये shapes होते हैं, 3-dimensional shapes, they can be solid from inside or they can be hollow also. वो अंदर से खाली भी हो सकते हैं. आपने बाहर से देखा, शेप दिख रहा है, you can make out that this is a cube or this is a cuboid or this is a sphere, but it is not necessary that they are solid from inside. They are called solid shapes because they have 3 dimensions and they are covered from all sides. Okay.
and they have 3 dimensions, that is length, height and width. मतलब उनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और एक हाइट होती है. So that is why they are called 3 dimensions and they can be solid or hollow. वो solid भी हो सकते हैं और अंदर से खाली भी हो सकते हैं. Hollow means खाली. Now we say it has 3 faces, it has 2 edges, it has 1 point or 1 corner. Now what is a face? Face का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा फेस है, हम एक दूसरे का फेस देख सकते हैं, दैट इज अ फेस. सो इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके केस में फेस मतलब पार्ट ऑफ अ शेप दैट इज फ्लैट और कर्व्ड. मतलब किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का जो पार्ट जो या तो कर्व्ड है या फ्लैट है, या तो there can be only two types, there are only 2 types of surfaces, सिर्फ 2 तरह के surface है. So the surface can be either flat or the surface can be either curved. या तो surface flat होगा या surface curved होगा. तो face जो है वो shape का वो part which is either flat or curved. Like we say it has all 6 flat faces, it has 1 curved face and 2 flat faces, it has 1 curved face, okay, it has 1 curved face and 1 round face and 1 flat face. So face is part of a shape that is flat or curved. मतलब किसी shape का वो part जो कि flat है या curved है. ठीक है. Like for example a cube has 6 of these. मतलब ये you can see a cube here. So cube has 6 of these. मतलब cube में ये पूरे जो है वो 6 फेसेस होते हैं. ठीक है. सो फेस मतलब किसी भी शेप का वो पार्ट जो कि फ्लैट है या कर्व्ड है. देन एज. एज लाइक आई सेड इट हैज़ 8 edges, it has 12 edges, it has 1 edge, it has no edge. Then what is edge? What do you mean by edge? Edge का मतलब क्या है? Edge is a line where 2 faces meet. You can see here edge is a line where 2 faces meet. Okay. So for example a cube has 12 of these. Cube में कितने edges हैं? It has 12 because there are 6 faces. Face बताया किसी भी shape का solid किसी भी solid shape का part जिसको कि which is either flat or curved. So since there are 6 faces, therefore there are 12 edges because edge is the line where 2 faces meet. जहाँ पे 2 faces meet करते हैं. तो since 6 faces are there, so there will be 12 edges. The next is vertex or point or corner, all are same. Okay. Like a cube and cuboid have 8 points, 8 vertex you can say, okay, or 8 corners or 8 points. And for vertex or point is the place where 3 or more edges meet. जहाँ पे आकर के 3 या or in later classes you will learn about other solid shapes also. So here where since we are doing three dimensional shapes, तो जहाँ पे जिस जगह पे आके 3 dimensions मिलते हैं, that point is called vertex. Okay, जहाँ पे 3 edges आके मिलती है, length, breadth and height, that is called point. Okay, here you can see, like suppose this is a cuboid. So these are the faces. So this is the point, okay, where length, breadth and height, 3 dimensions are meeting. 1 point, 2 point, here this dimension and this dimension is meeting. Then this point, this dimension and this dimension, 3 dimensions are meeting. So edge is a place where vertex or corner is a place where 3 or more edges meet. Okay, जहाँ पे 3 edges आके जहाँ meet करती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, that point is known as vertex. Okay, then
क्यूब, व्हाट इज क्यूब? अभी मैंने बताया फेस किसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं एंड पॉइंट किसको बोलते हैं. ओके, फेस मतलब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वो पार्ट विच जिसका कि फ्लैट सरफेस हो या कर्व सरफेस हो. देन एज, एज इज द लाइन वेयर टू फेसेस मीट. एज वो लाइन है जहाँ पे टू फेसेस मिलते हैं. एंड पॉइंट और वर्टेक्स और कॉर्नर इज द प्लेस वेयर थ्री एजेस मीट. जहाँ पे थ्री एजेस आकर के मिलती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज कॉर्नर और वर्टेक्स. नाउ क्यूब. Cube is a three-dimensional shape which has six square faces of all the same size. Cube में six faces है and all of them are square. Example, dice, Rubik cube. Okay. Then cuboid. Cuboid is a three-dimensional shape which has six rectangular faces. Here you can see it is a three-dimensional shape which has six rectangular faces. Cube, cuboid मैंने बहुत बार बताया, दोनों में number of faces, edges and points same है. The only difference is in a cube all the faces are of square shape. In a cuboid all the faces are of rectangular shape. Not necessary, maybe two opposites or four opposite faces are square also. It is not necessary that in a cuboid all the faces are rectangle only. The only thing is that all the faces are not of the same size and opposite faces will be equal. ऐसा भी नहीं है कि opposite faces में एक face square हो और एक rectangle हो. No, जो opposite faces होंगे they will always be equal. जो opposite faces होंगे वो हमेशा equal होंगे. तो it may be square, it may be rectangle. क्यूबॉइड में सम फेसेस में भी रेक्टेंगल, सम फेसेस में भी स्क्वायर. कुछ रेक्टेंगल हो सकते हैं, कुछ स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट फेसेस विल ऑलवेज बी इक्वल. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन टेक मैच बॉक्स, you can take eraser, isn't it? You can take your notebook, your book, your pencil box, geometry box which you use, your table, desk, everything is rectangular. These are all examples of cuboid. Then sphere. Sphere is a perfectly round three-dimensional shape like a ball. It has only one curved face. Sphere में क्या है? सिर्फ एक curved face होता है. Okay, no edge, no corner, only one curved face. Examples are football, basketball, small ball, rubber ball, tennis ball, all kinds of ball, or all the vegetables or fruits which are like watermelon, okay, pumpkin, these are all spherical. अभी समर का सीजन है, तरबूज बहुत मिल रहे हैं. ऑफ कोर्स वाटरमेलन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवल शेप. जैसे ओवल भी होता है ना वाटरमेलन. समटाइम्स वाटरमेलन इज spherical and sometimes watermelon is oval also. Then for sphere, lemon, tomato, these are absolutely round. Then cone. Cone is a three-dimensional shape with a circle at its base and a pointed vertex. In cone you can see one face has got round surface, one face, that is the bottom face. Bottom face has got plain surface, one edge and one pointed vertex. Examples are ice cream cone, traffic cone. You must have seen these kind of traffic cone which are kept on road for controlling the traffic. Then cylinder. Cylinder is a three-dimensional shape with circular ends of equal size. In cylinder you can see three faces. One, this, it has round surface and top and bottom faces have flat surface. For example, फूड कैंस, जैसे मैंने बताया चीज़ का बॉक्स आता है, टिन चीज़ जो होती है, टिन फूड्स होते हैं. ओके, फूड कैंस, बॉक्सेस, these are all cylinder in shape. Okay, so these are some of the basic three-dimensional shapes. Today I will stop here only. Thank you, children.